So Faisal Alicia, Iramasqar, kindly mute your mic. Faisal Iramasqar. Alicia will start from our group. Alicia. Assalamu alaikum. Myself Alicia. Today I'm going to start my presentation. My presentation topic is introduction and orientation to the pharmacy. So I'm going to talk about what is pharmacy, what is pharmacist, and what is the role of pharmacist, scope of pharmacy, and what are the career opportunities in the field of pharmacy. So now I want to tell about what is pharmacy. Next. Introduction and orientation to pharmacy. Next. Pharmacy. Pharmacy is the art or science of preparing and dispensing medical drugs. It also includes more modern services related to healthcare and provision of drugs and related information to the public. So have a great role in diagnosis. The word pharmacy is derived from Greek word pharmakon, meaning drug. The word pharmacy has two meanings. In general sense, it is a place or shop where drugs or medicines are sold. In professional sense, it is the profession, the members of which deal with drugs. Pharmacy आर्ट और साइंस है जिसमें हम जो है प्रिपेयर और डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग्स की. इसमें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, ओरिजिन, इनका प्रोसीजर क्या है ड्रग्स डेवलपमेंट का, इनकी प्रिपरेशन, इसके इफेक्ट. फार्मेसी जो एक ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, इससे ड्राइव हुआ है. इसका मतलब है ड्रग. फार्मेसी के दो मीनिंग है. इन जनरल सेंस में ये प्लेस, ये शॉप है जिसका जहाँ पे ड्रग और मेडिसिन सोल्ड होती है. और प्रोफेशनल सेंस में ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे मेंबर्स जो है डील करते हैं ड्रग्स के साथ. नेक्स्ट. Pharmacists. Pharmacists are expert of drugs. Pharmacists are member of pharmacy provision dealing with all aspects of drug preparation, combination, identification, analysis, selection, standardization, action, use, preservation, counseling, sales, information. Pharmacists जो है licensed healthcare professional होते हैं जो कि specialized होते हैं providing information about different medication में. Pharmacists जो है experts होते हैं drugs के. ये मेंबर होते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के जो कि तमाम एस्पेक्ट्स जो होते हैं ड्रग्स से उसके साथ डील कर रहे होते हैं. प्रिपरेशन, उसकी कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, सिलेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, एक्शन, यूज, प्रिजर्वेशन, काउंसलिंग, सेल्स एंड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट. Pharmacist, a superhuman who turned bunch of dangerous chemical into life-saving drugs. The reason behind the doctor's success. Now let's move to the next topic. What is the scope of pharmacy? There are many different types of pharmacy where a trained pharmacist may work. This includes community pharmacists, hospital pharmacists, clinical pharmacists, industrial pharmacists, compounding pharmacy, ambulatory care pharmacy, regulatory care pharmacy, home care pharmacy, military pharmacy, retail pharmacy, nuclear pharmacy. Next. Career opportunities. Pharmacists may work as industrial pharmacy, clinical pharmacies with cooperation of physician and pharmacists may work as clinical pharmacy. Pharmacy may work as industrial pharmacy. Pharmacy may work as hospital pharmacy. Production, research and development, marketing, pharmaceutical sales, hospital pharmacist, clinical pharmacist, community pharmacy, wholesale pharmacy, government services, regulatory affairs, drug testing, laboratories, drug purchasing and distribution, military services. After PharmD, जो pharmacist है वो इन तमाम field में जो है वो work कर सकते हैं. Okay, that end of my topic. Now Afia will carry on. Myself, Afia Akram, and now I am
going to represent hospital pharmacy. Basically, what is hospital pharmacy? That department of the hospital which deals with the procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging, and distribution of drugs. The practice of pharmacy within the hospital under the supervision of a professional pharmacist is known as hospital pharmacy. As per known history, the first pharmacy was established in Baghdad in 754 AD. बेसिकली जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका काम क्या होता है कि जो भी ड्रग्स हैं उनकी स्टोरेज, उनकी कंपाउंडिंग और उनकी डिस्पेंसिंग के साथ डील करना, उनकी टेस्टिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग. Functions of hospital pharmacy. Basically, what are the functions of hospital pharmacy? To provide specification for the purchase of drugs, chemicals, etc., proper storing of drugs, discarding the expired drugs and containers found and missing labels. यानी जो भी हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस में आता है वो यही आता है कि जो भी हमारे पास ड्रग है उनकी फिलिंग करना, उनकी लेबलिंग करना, उन मेडिसिन के कंटेनर्स को एडमिनिस्ट्रेट करना, management of stores which include purchase of drugs, proper storage conditions and maintenance of records, establishment of maintenance of drug information center. Objectives of hospital pharmacy. What are the objectives? क्या मकासद है हमारे पास hospital pharmacy के? To ensure the availability of the right medication at right time in the right dose at minimum possible cost. To professionalize the functioning of pharmaceutical services in a hospital. To act as a counseling department for medical staff, nurses, and for patients. To act as a data bank on drug utilization. To participate in research projects. To implement decisions of the pharmacy and Therapeutics Committee. To coordinate and cooperate with other departments of a hospital. To plan, organize, and implement pharmacy policy procedures in keeping with established policies of the hospitals. Now, my next topic is retail community pharmacy. So basically, retail pharmacy, what is retail pharmacy? Retail pharmacy is pharmacy in which drugs are sold to patients as opposed to a hospital pharmacy, also known as a community pharmacy. Retail community pharmacy. The term retail community pharmacy means an independent pharmacy, a chain pharmacy, a supermarket pharmacy, or a mass merchandiser pharmacy that is licensed as a pharmacy by the state and that dispenses medications to the general public at retail prices. बेसिकली रिटेल फार्मेसी हमारे पास जो भी हमारे पास ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, जो भी हमारे पास सुपरमार्केट्स पे या एक जनरल स्टोर पे सोल्ड की जा रही होती हैं, वो रिटेल फार्मेसी कहलाता है. रिटेल फार्मासिस्ट. एक्चुअली में रिटेल फार्मासिस्ट कौन होते हैं? रिटेल फार्मासिस्ट प्रोवाइड जनरल हेल्थ केयर एडवाइस एंड सप्लाई प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू दी पब्लिक. यानी कि रिटेल फार्मासिस्ट वो होते हैं जो जनरल हेल्थ केयर एडवाइस दे रहे होते हैं लोगों को, और जो भी हम उनके पास प्रिस्क्रिप्शंस लेकर जाते हैं वो हमें उसी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिकेशन देते हैं और हमें उसके एडवाइस देते हैं कि हमें उसे किस टाइम पे किस तरीके से लेनी है. रोल ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट. Providing advice about health issues, symptoms, and medications in response to customer inquiries. Recruiting, training, and managing staff, processing prescriptions and dispensing medication, ordering and selling medicines and other stock, meeting medical representative, managing budgets, keeping statistical and financial records, preparing publicity materials and displays, marketing services. की स्किल्स फॉर रिटेल फार्मासिस्ट. एक फार्मासिस्ट के लिए, एक रिटेल फार्मासिस्ट के लिए क्या की स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए? दे आर मेंशन बिलो. मैच्योरिटी, attentiveness, responsibility, excellent interpersonal skills, organizational skills, verbal communication skills, confidence, and commercial awareness, which are necessary for a retail pharmacist. Forensic pharmacy. Forensic pharmacy is the foundation of the structure on which the sacred profession of pharmacy has been built. It provides much needed legal support, professional backing, and ethical strength for the systematic growth of the profession. Basically, what is forensic pharmacy? Forensic or legal medicine. Forensic, which is derived from used in courts of law.
deals with the application of medical knowledge to aid in the administration of justice. It is used by the legal authorities for the solution of legal problems. Some examples are applying the medical knowledge in deciding cases of injuries, murder, suicide, accidents, sexual offenses, poisoning, etc. In short, it deals with medical aspects of law. Aims of forensic pharmacy. What are the aims? क्या aims हैं हमारे पास forensic pharmacy के? To aid the administration of justice by correlating much medical knowledge and applying it to the purposes of law. Truth or nearest reasonable approach to it that is possible from what is observed is the sole aim of forensic medicine. Its particular field of activity is judicial investigation, both civil and criminal. So it does not itself prove the case of prosecution. It corroborates medical evidence in all cases of crime involving person, example, homicide, suicide, assault, sexual offenses, traffic accidents, poisoning, etc. It finds out the medical evidences in all cases of crime involving the person. It deals with medical aspects of law. Basically, हमारे पास जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, कोई भी सुसाइडल केस होता है, कोई भी एक्सीडेंट केस होता है, उसके अंदर हमारे पास जो भी हम डायग्नोसिस वगैरह कर रहे होते हैं वो हमारे पास फॉरेंसिक फार्मेसी में आ रहा होता है. Now Mehak Rani will continue from industrial pharmacy. Myself, Mehak. Today I'm talk about industrial pharmacy. Basically, नाम से जाहिर होता है industrial pharmacy है. Industrial pharmacy is a discipline which includes manufacturing, development, marketing, and distribution of drug products, including quality assurance of these activities. Industrial pharmacy is concerned with the preparation of medicines. Next. Role of pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries के क्या roles हैं? To guarantee patient safety by producing a safe product, to develop a new drug into effective medicines, to discover new way technologies and products to manage health, to promote drug research, to discover self and effective new drugs. Roles in industries. Industries में क्या roles होते हैं? Patient application and drug registration, regulatory affairs, quality control, management and administration, research and development, marketing, products. Next. Industries comprises of following departments. Industrial organization, manufacturing department, quality control, management, research and development department, marketing department, accounting department, engineering department, dispensing unit, production unit, packaging unit, labeling unit, quality control department, quality assurance. Basically ये सब वो department हैं जिनसे मिलकर एक company comprise होती है. Next. Pharmaceutical industries in Pakistan. The Pakistan pharmaceutical industries meets around 70% of country demand of finished medicines. Today, Pakistan has about 759 pharmaceutical manufacturing units, including those operates by 25 multinational presented in the country. Pakistan has very vibrant and forward-looking pharma industries. At the time of independence, 1947, there was hardly any pharma industries in this country. Companies operating in Pakistan. There are 30 multinationals and 334 local pharmaceutical companies in Pakistan. GlaxoSmithKline, Syme, Hingoon, Pfizer. ये सारी वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. Now let's move to the next topic, which is pharmaceutical education. Basically, pharmaceutical education है क्या? Pharmaceutical education offers an opportunity to pharmacists with advanced degree in any of the professional specialties, expanding enrollments and changes in the curricula at the colleges to meet employment needs of the future, results in any increased need of colleges levels instructor.
potentially higher salaries for more freedom and freedom for research and writing, independence of action, and the cultural surrounding in pharmaceutical education make teaching attractive. Basically, pharmaceutical education हमें opportunity provide करती है कि हम PharmD करने के बाद आगे भी और अपनी जैसे PharmD करने के बाद हम MPhil कर सकते हैं और भी बहुत सारी opportunities हैं जो pharmaceutical education हमें provide करती है. Next, please. Pharmaceutical research. Basically, pharmaceutical research है क्या? Research is the activity that make pharmacy science rather than a technical skill. Research एक activity है जो pharmacy को एक science बनाती है rather than technical skill. This form the heart of any industries as it is the key to grow and sustenance. Mainly MPharm and PhD are in great demand in the various areas of pharmaceutical R&D, yani research and development. Other areas where professionals are required are new drug and research, NDER, process development, T&D, formulation and development, F&D. Next. Basically, research is important for the development of pharmacy practice. It is the strength of pharmacy provides service. It is important patient care. It is important for patient care and contribute generally to health care knowledge. Goals of pharmacy, goals of research and pharmacy. Pharmacy research के goals क्या हैं? Advancement of pharmacy practice, promoting human health and social well-being, promoting quality and institution and the community, promoting professional development. Types of pharmaceutical research. Pharmaceutical research की क्या types हैं? कितनी types हैं? Health service research and development. It includes behavioral and systemic research, such as a research on cost benefits issues and in pharmaceutical care. Number 2, operation research, such as evaluation of new and extensive pharmacy programs and service. Next. Characteristics of a successful researcher. एक कामयाब researcher की क्या characteristics हैं? Self-motivation, attention to detail, excellent time management, strong writing and verbal communication skills, ability to work independently, creativity, curiosity, patience and patience to research for new knowledge, keep abreast of scientific and clinical literature, ability to ask questions, create research hypotheses, designs, methodologies, and methodologies to answer research questions. Next. Component of a research plan. एक research plan के क्या components हैं? A problem statement, a review of available literature on the subject, the object for the project, description of the methodologies to be used, a description of statistical analysis, a budget and time frame for the project, the expected applicability of research findings. Next. Research methods. Research के methods. Cross-sectional study. Basically, cross-sectional study है क्या? Data collected from the population on one occasion only. वो data जो सिर्फ एक occasion पे collect किया जाए, वो cross-sectional study में आता है. Before and after study, cross-sectional observation, before and after invention. Longitudinal study, follow up a sample of individual over a period of time. Basically ये वो research method है जिसमें हम data collect करते हैं एक या एक से ज़्यादा occasions पे. Exploratory study जैसे कि नाम से जाहिर है, तहकीकाती study. इसमें हम investigation करके फिर data collect करते हैं. Retrospective study
नाम से ही जाहिर हो रहा है गुज़िश्ता ज़माने में पास्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाए वो रेस्पेक्टिव स्टडी कहलाती है। और प्रोस्पेक्टिव स्टडी, इसके भी नाम से हमें जाहिर होता है। प्रोस्पेक्टिव मीन आने वाले ज़माने से मुतालिक जो भी डेटा कलेक्ट किया जाए वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में आता है। नेक्स्ट रिसर्च करियर के पाथवे academia, contact research organization, healthcare, institutional setting, industry, government. Next. I am not a doctor, but I serve for mankind to make sure that they are relieved from pain. I am a pharmacist. So this is the end of my presentation. Thank you for listening to me. एक्सीलेंट ग्रुप बी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप लोगों ने अच्छा प्रेजेंट किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बोथ। अच्छा, अब ये कि मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिजिकल फार्मेसी को कोर्स को पढ़ने में और समझने में? आप लोग अनम्यूट है मेरी तरफ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑलरेडी आप लोगों को ऑल्टन, एंसल और ठीक है, वो जो अग्रवाल की बुक है वो मैं केम स्कैन करके आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जो टॉपिक मैं उसमें से पढ़ा रही होती हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। श्योर मैम। अच्छा ठीक है, हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अब कब मिलना है फिजिकली प्रीमिसेस में? मैम 30 जून। 30 को, ओके चलें। 24। Oh, मैम 24। अल्लाह हाफिज। ठीक है 31, ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। देख रहा होता है। Now, Asan will gonna continue it. The next field is nuclear pharmacy. इसे हम बेसिकली रेडियो फार्मेसी भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर फार्मेसी में रेडियो एक्टिव ड्रग्स के थ्रू डायग्नोस्टिक, इमेजिंग और थेरेपी भी कंडक्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली हमारे पास हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होती है। Nuclear pharmacy, also known as radio pharmacy. In nuclear pharmacy, the nuclear pharmacist prepare and dispense medicine, specific radiopharmaceutical doses for diagnostic, imaging, and therapeutic procedures for use in hospital, nuclear medicine departments, and outpatient clinics. The next is industrial pharmacy. Industrial pharmacy basically पूरे pharmacy profession की सबसे vast field है। ये वास्ट इसलिए है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस जो भी इंक्लूडेड है। Industrial pharmacy is a process which includes manufacturing, development, marketing and distribution of the drugs including quality assurance of the developed drug. जैसा कि मैंने बताया, pharmacy offers opportunities to pharmacists of all educational levels. इंडस्ट्री फार्मेसी हमारे पास सारे एजुकेशनल लेवल्स जैसे कि ग्रेजुएट और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट्स को भी अपॉर्चुनिटी देती है कि वो आके इंटर्नशिप कर सकें और एक्सपीरियंस गेन कर सकें इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट देखकर। स्लाइड ऊपर करो, स्लाइड ऊपर करो, ऊपर। Industrial pharmacy. Industrial pharmacy. The largest number of pharmacists is involved in marketing, sales, and administration. Some pharmaceutical manufacturers employ pharmacists as their professional service representatives to educate physicians and pharmacists about the manufacturer's product. So
लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड फार्मासिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो जूनियर फिजिशियंस और फार्मासिस्ट को एजुकेट कर सकें कि क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइंस क्या हैं और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है उसका प्रोसीजर क्या है, इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, ये सब वो उनको फिर अपने जूनियर फार्मासिस्ट और फिजिशियंस को एजुकेट करते हैं। द नेक्स्ट इज फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि एक जो फोरेंसिक फार्मासिस्ट होता है वो काफ़ी तरीकों से गवर्नमेंट के साथ या फिर पुलिस के साथ क्रिमिनल स्पॉट पर कौन से स्प्रेस, कौन से केमिकल्स, कौन से ड्रग्स यूज़ करने हों, और इसके साथ साथ हेल्थ केयर फ्रॉड्स में जैसे कि पॉइजनिंग, जैसे कि क्रिमिनल केसेस लाइक पॉइजनिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरेंसिक फार्मासिस्ट। Forensic pharmacy is application of sciences of drugs to legal issues. Forensic pharmacists engage in working relating to litigation, the regulatory process, and the criminal justice system. Forensic pharmacy overlaps with many other forensic fields. इसका मतलब क्या हुआ कि forensic pharmacist की जो टीम होती है फोरेंसिक की उसमें और भी फील्ड्स के जैसे कि फोरेंसिक डॉक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि साथ मिल के फोरेंसिक फार्मासिस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। For a pharmacist hold a variety of positions with local, state and federal governments. ये जो फील्ड है फोरेंसिक फार्मेसी ये ज्यादातर या फिर मोस्टली हमारे पास गवर्नमेंट से ही लिंक्ड होती है। Many pharmacists do freelance work as forensic litigation consultant. A forensic pharmacist can be a valuable resource in legal cases relating to malpractice, adverse drug reactions, drunk and drug driving, healthcare frauds, poisoning, and numerous other types of civil and criminal cases. Now Zan will carry on. Thank you, Azan. What is pharmaceutical education? The Doctor of Pharmacy is the entry-level degree in pharmacy. It is a graduate professional degree at doctorate level with clinical focus. The qualification allows the pharmacist to develop in any field of pharmacology, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, etc. Young pharmacists are most often trained and mentored by experienced pharmacists who are able to share first-hand experience and knowledge about the industry. जैसे फार्मेसी एजुकेशन हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे कि हम अपनी प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एक फार्मासिस्ट को अच्छी सैलरीज ऑफर होती हैं और हमें बहुत फ्रीडम मिल जाता है कि हमें अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के लिए बहुत फ्रीडम मिल जाता है। Pharmacists are able to take their place in the health teams that work towards bettering health for all. Move towards next topic. Pharmacy journalism. Pharmacy journalism is the activity of gathering, assessing, creating, presenting any news and information related to pharmacy. It's a beneficial profession for us because our pharmacy journalists know the news before most of the people are even aware of the event. How can our pharmacy journalist should be creative minded, filled with curiosity, enjoy reading and writing. एक जर्नलिस्ट को क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, मतलब उस इंसान को अपने काम को लेकर बहुत क्यूरियस होना चाहिए उस बारे में जानने को, क्योंकि इसी की बदौलत वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और लोगों तक उसे पहुंचाएगा। उस इंसान का पढ़ने और लिखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। मूव टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट सर्विसेज। Government services opportunities to pharmacy in various capacities. जैसे एक फार्मासिस्ट एज अ कमीशन और नॉन कमीशन ऑफिसर किसी भी फोर्स में अप्लाई कर सकता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा और भी बहुत से अदारे होते हैं जहाँ पे एक फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है। मैम कंटिन्यू प्लीज। Thank you, Zan. Let's get into another point, which is about pharmaceutical research. As the name denotes, it is the research in the field of pharmacy.
This is a very vast aspect in the field of pharmacy. It usually gives us initiated research of a pharmacist. And it is about हम कोई भी drug discovery हो रही है, any drug development, any evolutions in the drugs and regulatory approvals. इन सब चीज़ों को हम pharmaceutical research में देख रहे होते हैं and study कर रहे होते हैं. Why is it needed or what is the work of the pharmaceutical research? अगर हम इस पे आ जाएं तो basically it performs two major works for the benefits of the pharmacist. The first one is to collect and analyze data about the usage and about the efficacy, about the treatment in preclinical developments. This is its first work. The second work, that why it is needed, is to collaborate with the members of the lab team who are doing the researches and with the stakeholders who are not directly doing involved in the clinical researches but giving money for the clinical research. Stakeholders are those who are using their money for clinical researches but are not involved in the researches as well. So the question arises here that is it beneficial or why it is important? क्योंकि बहुत बड़ा aspect है हमारी field का, तो it is very beneficial and it is very important because इसके भी दो main reasons हैं. The first one is it strengthens pharmacy provides services. जितनी भी सर्विसेज हमें फार्मेसी प्रोवाइड करती है उसकी जितनी नॉलेज है वो हमें फार्मास्यूटिकल रिसर्च से मिलती है. द सेकंड वन इज इट इम्प्रूव्स द पेशेंट केयर and the healthcare knowledge. These are the two main reasons that's why it is very beneficial and this is very, very important. Let me now turn to another point, which is organizational management. The word itself denotes organization means a huge organization like an NGO, a hospital or a huge pharmacy, and management means to manage. So a question arises that why we need an organizational management. A single person cannot able to do every work. Various responsibilities are included, as if we talk about organization management or we talk about a huge pharmacy, it will be very difficult for one person to oversee all the area alone. Particularly when we talk about a huge pharmacy, in this case, we need a pharmacy management team to perform all duties properly. This team has three main qualities, three major qualities which are very beneficial for pharmacy management. Those three qualities are: the first quality is that they have a good communication skill with the staff and with the customer, with everyone, with the patient, so they can easily communicate with them. The first main quality. The second quality is about having a good understanding of analytics and narratives, that what is the problem and how we will gonna overcome this. The third most important quality is that they should understand the concept of sales and marketing, क्योंकि वो हेल्प करेगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में. अगर हमें सेल्स का, बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमें सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि हम उसको मजीद आगे आगे रन कर सकें. ये ना हो कि कुछ टाइम के बाद वो फार्मेसी या वो हॉस्पिटल क्लोज हो. So the third main quality is about the understand the concept of sales and marketing. Now I want to draw your attention towards another, my last point, which is about information technology. Information technology in the field of pharmacy क्या कर रही है? Basically, information technology is a worldwide field और अब ये जो है हमारी फार्मेसी में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है. एक मैं आपको फैक्ट बताती चलूँ, हमारी जो फेडरल लेजिस्लेशन है, इट इज ड्राइविंग एडॉप्टेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पेशेंट सेफ्टी. अब इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी फार्मेसी में रोल प्ले कर लिया कि हमारी जो फेडरल लेजिस्लेशन है वो भी ये चाह रही है कि हमारी पेशेंट केयर के लिए हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए. इट इज अ वेरी ग्रेट, इट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन द फार्मेसी प्रैक्टिस. इट इज अ वेरी डायनामिक फील्ड and having its relevance from past few years. Pharmacists are very interested in information technology. Why? First, the two reasons. First of all, it envisions the increasing efficiency in our daily basis. हम हर काम जो हम अपने daily basis पे कर रहे होते हैं वो हमें उसको और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से करना बता रही होती है. The second thing is it improves our access towards the vital information.
हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए बुक्स नहीं देखनी पड़ेंगी, हमें लिस्ट नहीं निकालनी पड़ेंगी, हमें किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ ऐसी एप्स बन गई हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे गूगल है हमारे पास, हमें ऑथेंटिक ऐसी वेबसाइट्स मिल गई हैं जिनकी वजह से हम वन टैब में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होने वाला इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। नाउ लाइबा, ओवर टू यू। Okay, so the last heading of our topic is clinical trial. The question arises actually what is clinical trial? As the name indicates that it is a trial for clinical purposes. जब भी कोई न्यू ड्रग हमारी मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है, so it has to be first tested in clinical trial. क्यों? क्योंकि it is the most important phase of drug discovery जिसमें हम अपनी ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, उसके बेसिस पर उसको जज करते हैं। अब हमारे जैसे कि आपको पता है कि ऐसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग सो द डिजीजेज आर, सो हमें उसके लिए मजीद दवाइयाँ बनाने की, मोर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ी है। अगर हम अपनी करंट पेंडेमिक सिचुएशन की एग्जांपल ले लें कि ऐसा हो, जिस तरह आप कोरोना को देख लें, ये एक्सपेक्टेड नहीं था और इसकी कोई वैक्सीन या कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी। तो ऐसी नई नई डिजीजेस के लिए जो कि हमारे पहले ना हो, जो कि अब इंट्रोड्यूस हुई हो हमारे वर्ल्ड में, उनकी ड्रग डोजेज फॉर्म और उनकी ट्रायल्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग को पास करवाया जाता है। तो इसके कुछ फेजेस होते हैं विच आर प्री क्लिनिकल ट्रायल, इंटरमीडिएट एंड द लास्ट द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें वी फर्स्ट टेस्टेड ड्रग्स ऑन स्मॉल एनिमल्स, जिसमें अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, एंड द लास्ट स्टेज हम उनको ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट करके उसको पास करते हैं। So it's obvious that if the drug is manufactured for a human being, so it has to be first tested on a person to know their therapeutic effect and therapeutic index. So we can say that clinical trial is actually a phase which has to evaluate its safety and efficacy of drug. Now let's move towards the conclusion of our whole topic. As me and my group members have already defined the various scope of pharmacy, that how important pharmacy plays a role in our world by helping patients for their health care. It plays a vital role in making our lives more easier by pharmacy practice, including compounding and dispensing medications, and also some modern services like patient care, medication for safety and efficacy, providing drug information. So it is a better way to shop for health and beauty. And actually pharmacy एक risky और एक trustworthy field है जिसके ऊपर हमारे ऊपर कम्युनिटी ट्रस्ट करती है कि हाँ ये ड्रग हम ले सकते हैं इनके ऊपर ट्रस्ट करके। सो pharmacy is a healthcare profession in helping people achieve the best results from their medications. This marks the end of our group assignment presentation. Hope you all like it. Thank you so much. वेरी गुड ग्रुप ए, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन बनाई और डिलीवर करी। अच्छा ग्रुप बी, आप लोगों की प्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, इस ग्रुप को, इस मीटिंग को एंड करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि रूम हमें 30 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है सेशन के लिए। तो हम अभी इस वाले सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। फिर आप लोग दोबारा से उसी लिंक के ऊपर लॉगिन कीजिए। मैं फौरन ही ग्रुप बी की प्रेजेंटेशन भी लेना चाहती हूँ क्योंकि अभी उसके बाद फिर हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम, एक्नॉलेज्ड। ठीक है, फिर जैन इसको एंड कर दीजिए मीटिंग को। ओके मैम।